Gratitude greetings, and I am super happy. Why? I love children, and here is an alternative learning enthusiast, founder Education Next. Lot of experience in nurturing children in new ways, breaking the old, boring, the systems which are not working. Just have a great lifestyle where it is life centric. Welcome, Priyanka Modi. I'm super happy. Thank you for your time. Thank you for accepting Thank to be. you. Thank you, Sunny, for having me. I'm super excited with all the So, kind words that you said about me. अच्छा लगा मेरे को भी. Thank you. So please enlighten us. What do you do and how do you do? What is Education Next all about? You know, we have all the schools where there's rote learning, where there's chalk and talk still going on, and then the focus is on marks. So what are you up to? Why are you up to all this? Please Yeah, enlighten. so my journey to education started maybe 7.5 years around back when my son was, ready for, I don't know, ready, like he was big enough that people started thinking he's ready for school. तो अब क्या करे, बच्चा 2 साल का हो गया है, राइट? एंड देन व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो वी, it's usual, it's not unusual to find start looking for schools because you see, you wake up and you see every kid, with a bag and going around, right? So now the pressure starts building up. Of course, we are very happy in each other's life. I had dropped my work. I was not working at that time. We were very happy. We were learning. We were reading. We were doing everything. But the pressure starts building up. How long is the child going to stay at home? And that was the time I started looking for schools. And but I didn't want to leave Adi because uh, the journey started in I got so many experiences where I understood ki, you know um, every time I felt that I could have done better. you know Adi was learning better at home, and the moment he goes to oh, you have these pre kindergarten spaces where children go basically to learn, right? To sit and to talk to kids So because true. they are not very, वो तो बात भी नहीं कर पाते उस टाइम. तो जब आदि when he went, तो हुआ क्या कि he came with a worksheet on the second day of the school or first day, and the school had reached the letter M, and I was like, अरे बच्चे M तक पहुंच गए. And I was like, ये तो that was not the idea. I thought Adi will go sit. Wait, he will learn to leave the home maybe, Correct. कि मम्मी के अलावा भी और भी लोग हैं दुनिया में. But he comes with a worksheet, and that got, it got really scary. So then I started looking for other spaces where worksheet, I had paid everything, done everything, but I didn't want this for Adi. So that hunt came to another school where I found a place where they don't focus on, you know like learning. It's a free space where they give space to children. एंड ऐसा हुआ कि मुझे भी ऑफर आया कि, बिकॉज आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, दे थॉट अरे दिस पर्सन इंटेलिजेंट इज अ मदर गुड है, फिट. इनको हायर कर लो. यही हमारी कंसल्टेंट बनेगी. तो एसेट. भी ऐसा, तो ऐसा हो गया कि उनको भी मतलब एक सडन जरूरत थी और मैंने सवाल बहुत सारे पूछे थे, तो दे ऑफर्ड मी कि ये भी स्पेस खाली है, व्हाई डोंट यू टेक दिस अप? एंड आई सेड नहीं नहीं, आई एम an optometrist, you know and I plan to continue, लेकिन I got scared कि अगर मैं इसमें आ गई तो फिर how मेरा करियर का क्या होगा, my mom dad will gobble me up. तो फिर बट देन एक होता है ना, यू स्टार्ट थिंकिंग चलो ट्राई वॉलंटियर करके देखते हैं, एंड देन आई गॉट अ जॉब. आई स्टार्टेड वर्किंग. आई एक रूबरू हो गई बहुत क्लोजली एजुकेशन से, लर्निंग क्या है, बच्चों को पढ़ाना क्या है. आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम किड्स, लेकिन किड्स लाइक्ड मी. आई डोंट नो हाउ. उनको क्योंकि बहुत डिफरेंट मजा. नो, कूल नो, हाँ. हाँ तो लर्निंग फोकस था उन ना. हाँ ए तो आया कि नहीं आया, ए ठीक से लिख रहे. वो हाँ नहीं था. तो मुझे साइंस मिला और बच्चे बहुत खुश होते थे मेरे साथ, क्योंकि आई नेवर क्रिएटिव, आस्क्ड कि इनोवेटिव. तो हाँ, तुमने होमवर्क किया है, मैंने कभी नहीं पूछा. तो शायद दैट वाज द रीजन चिल्ड्रन लव्ड हाँ. मी. एंड दे इसीलिए वुड. मैंने लिखा ब्लेस्ड टू बी अ स्टूडेंट. तो जब वो मेरे पास आते थे और सवाल पूछते थे, तो
मैं रास्ते में चलते चलते सोचती थी आज क्या करेंगे, ठीक है। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन हु वुड प्लान एवरीथिंग इन एडवांस एंड सबमिट इट टू द कि इंचार्ज कि मैं ये करूंगी। मुझे अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आ गया तो आई कांट टेक माई प्लान फॉरवर्ड, आई डू समथिंग इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। वहां से एक्सप्लोरेशन शुरू हुई एंड देन आई was introduced to a very interesting subject called global perspective, which actually made my perspective broader. And I thought कि कितना limited है school in the sense कि वही math, science, physics रोल करके पढ़ रहे हैं। There's so much to learn. So this very interesting subject introduced me to a lot of things. कि अरे if children could learn this way about topics like this, global perspective में you have topic like traffic क्या है, चॉकलेट का तुम्हारे हाउ मच योर चॉकलेट बार कॉस्ट, तो हाउ मच यू स्पेंड इन अ वीक इन अ चॉकलेट, चॉकलेट कहाँ से बन रहा है, कोको कहाँ से बन रहा है। तो आई स्टार्टेड लाइक learning and education is so much and we have limited ourselves। वहां से शुरू करके I went on learning, I became a program coordinator where I started suggesting schools कि अरे ये programs लेकर आओ। Then I went on to explore कि what are the other people doing, these volunteering organizations that ये गूंज है या फिर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो करते क्या है, और क्यों ना बच्चों को भेजे। तो मैं जबरदस्ती घुस घुस कर आई वुड ब्रिंग दिस प्रोग्राम्स कि मैम चलो ना ये प्रोग्राम कर लेते हैं, चलो ना ये कर लेते हैं, एंड लेट अस सेंड किड्स आउटसाइड। तो ऐसे आई बिकेम अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। आई स्टार्टेड राइटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर किड्स व्हेन देयर वाज अ कोविड टाइम कि अरे सीखो, learn about perspectives, learn about SDGs, because I had this feeling कि even as a kid in school I learned only what was served, I could not go beyond। I always maybe वो एक feeling थी। So I was very good with current, very bad with current events। जब घर में भैया मेरे brothers boys when they talk about movies and cricket and all, no, तो I was like I don't know anything। I was in a boarding school और वही दुनिया थी मेरी। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत रिस्ट्रिक्टिव फीलिंग आता था कि मुझे बहुत कुछ पता नहीं है। एंड आई थिंक वो भी एक रीजन है वेर आई स्ट्रांगली फील दैट किड्स शुड हैव, वर्ल्ड है ना बहुत बहुत ह्यूज है, और हमने बहुत एक सब कुछ को एक छोटा सा कंसाइज करके हमने बोल दिया है कि ये पढ़ो और एग्जाम में यही आएगा, यू नो। तो I wanted to break that, shatter that, and when COVID happened, and we had to move back to our hometown to live with my parents at that time। और फिर मैंने अगेन यहाँ पे स्कूल देखना शुरू किया and I couldn't find anything। I was lost। I couldn't find a job because because I don't have a teaching degree, right? तो वो तो इंटरनेशनल स्कूल्स की मेहरबानी होती है कि दे फाइंड समथिंग इन यू एंड दे गिव यू अ जॉब। अब आपको सीबीएसई में कहाँ मिलेगा ये, तो वो तो बोलेंगे भाई लेकर आओ बीएड, कहाँ है तुम्हारा, तुम बीएड तो है नहीं, एंड तो फिर यू डोंट हैव अ जॉब। एंड देन दे ऑफर यू डिफरेंट थिंग्स कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। तो मैंने कहा कि भाई आई डोंट वांट टू फिट इन द सिस्टम। Adi doesn't want to fit in the system। Adi and I myself, I felt we are beyond the system। So that's where I started doing different things। I was writing content for social media, I started working with my brother। I found an online school for Adi so that he 3 hours वो कुछ subjects पढ़ेगा and then he will have the entire day to himself। और that's how but I was writing in different spaces a lot। मेरा फ्रस्ट्रेशन था ना, इट वाज कमिंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, कभी ट्विटर में निकल जा रहा है, कभी इंस्टाग्राम में नहीं नहीं निकल नहीं, जा रहा वो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे आप, ऐसे फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलते उसको, उसको है। जागरूकता फैलाना, रोशनी फैलाना बोलते हैं। वेरी गुड। तो then my brother said, अरे whenever I ask you to do something you end up doing this only, तो तुम इसमें ही concentrate करो, you know कि तो एजुकेशन you, नेक्स्ट वाज बॉर्न। हाँ, and then education next was born। and फिर मैंने इतने एक्साइटेड होके मैंने सारे कंटेंट उसमें डालना शुरू किए। आई स्टार्टेड राइटिंग और दिस वाज समथिंग कि कोई है नहीं ना, आई एम एंजॉयिंग दिस अ लॉट। So I started putting up and then I discovered LinkedIn at that point of time। I think middle of 2022 एक community मिली। I started talking about my work, what I do। और फिर मैं यहाँ तो अकेली हूँ जो ये काम कर रही हूँ कि my son is learning free, I am exploring work free, remote working। बट बहुत सारे लोग मुझे मिल गए इस जर्नी में जो दूसरे दूसरे कंट्रीज में है। आई स्पोक टू देम, आई सेड कि मेरे से बात करो, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि और भी
कोई ऐसा कर रहा है कि मैं अकेली हूँ. तो people agreed, they wanted to talk about this, and whenever I talk to people, they vibe with this same frequency. I'm like, I'll speak or you will speak. Both of us are like that in many situations. Because we have similar stories, you know, many mothers doing it who have kids. They are doing it all by themselves, alone in this journey. And but they are doing beautifully. So I met a lot of people like that. ठीक वेरी है, तो फिर नाइस। तो ये कारवां चल रहा है, ये शुरू हो गया. आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे हिसाब से वो 20-25 लॉट ऑफ पीपल हैं. और आई स्पोक टू रोड स्कूलर्स, वर्ल्ड स्कूलर्स, होम स्कूलर्स, अनस्कूलर्स. और इसीलिए ये टर्म्स भले ही बहुत इंट्रीगिंग लगेगा कि ये क्या टर्म्स हैं, बट ये लोगों ने खुद से ही डिफाइन किया है अपने लर्निंग स्टाइल को. और वहां से जो मेरी जो लर्निंग है, आई फेल्ट कि लर्निंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड, इट्स ह्यूज. ओनली यू हैव टू सिट, ऑब्जर्व. बच्चों को ऑब्जर्व करना, बच्चों के साथ वक्त बिताना. अपने आप को, somebody has introduced this word to me lately who said, हमारी जो परसूट है लाइफ, वो लाइफ सेंट्रिक होनी चाहिए, वर्क सेंट्रिक नहीं. एंड आई लव दिस लाइफ सेंट्रिक वर्ड, क्योंकि मुझे लगा जैसे मेरे लिए बना है. क्योंकि आई एम जिंदाबाद। इन दिस मैं उस परसूट में हूँ कि लाइफ सेंट्रिक होना चाहिए. कि मैं क्यों कर रही हूँ, आज मैंने ये पोस्ट क्यों डाला, क्या पर्पस है. तो आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग वेरी डीपली अबाउट थिंग्स नाउ. कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत रैंडम बात कर रही हूँ, तो फिर मैं अपने आप को चेक आउट करती हूँ कि अरे, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई एम आई टॉकिंग, हु विल लिसन टू मी. एंड हियर यू आर, यू आर टॉकिंग टू मी. तो मैंने ऐसा कुछ और लिखा हम तो होगा बुला जो के पूछ रहे हैं, प्लीज बताओ ना, प्लीज प्लीज। तो अभी एजुकेशन नेक्स्ट किसको सर्व करता है, और हाँ तो कौन आपको एजु अप्रोच करे? हाँ तो एजुकेशन नेक्स्ट उन सबके लिए है, इधर एडुकेटर, स्टूडेंट और अ पेरेंट, हु आर एक्सप्लोरिंग लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम्स. या फिर दे वेरी आर इन द क्लासरूम, एट द सेम टाइम दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर लर्निंग को ऐसे ही फ्री एग्जिस्ट करना होता, तो व्हाट कैन आई डू. व्हेन पीपल टेल मी कि आई वांट टू लर्न, कि हम खुद से सीख सकते हैं, राइट. Now there is this, you have seen many people have learned skills in the last 4-5 years, and they have made something out of it. कि एक social media expert term was not existing 6 years before, but now you will see, so I am a social media expert. ये terms फेसबुक खुद एड से. एक्सपर्ट, फनल एग्जैक्टली एक्सपर्ट। हाँ, ये कहाँ से आ रहा है ना, ये तो पहले नहीं थी. कौन से जॉब में आपने तो स्कूल में तैयारी नहीं की ना, फेशियल फेसबुक एक्सपर्ट बनने की, एड एक्सपर्ट बनने की, इंस्टाग्राम रील एक्सपर्ट बनने की. आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की. ये क्योंकि टिकटॉक एक्सपर्ट, ये तो इन्फ्लुएंसर। टर्म. हाँ, इन्फ्लुएंसर, वेयर आर दीज टर्म्स कमिंग फ्रॉम. ये तो अभी अभी इजाद हुआ है, ये सारे टर्म्स अभी अभी आए हैं. ये और हम आपकी फिर दुकान ने किया है, एजुकेशन नेक्स्ट ने किया है, सब आ जाओ जी, जो बनना बन जाओ, सब पूरी दुनिया खुली है। ठीक है, अब एग्जैक्टली, मैं दुनिया पेरेंट खुली हूँ, है. मैं आपके पास आता हूँ, तो फिर मेरे जी. बच्चे को आप पढ़ा दोगे या मेरे को ही पढ़ा, मेरे को बोलोगे तू पढ़ ले, तू सिखा ले? किसको एम्पावर करते हो आप, बच्चे को एम्पावर मैं तो करते हो या पेरेंट्स मैं को? तो पेरेंट्स को एम्पावर कर रही हूँ कि आप कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं. अगर आपका बच्चा फ्री लर्नर है, या आपका बच्चा म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, वेरी लेकिन नाइस। आप पर आपको ऐसा लगता है कि 8 घंटे स्कूल में चला जाता है और बच्चा बहुत बोर्ड है, बट वो जब 2 घंटे में वो म्यूजिक सीखना चाहता है, तो आपको वो पैशन और जील दिखता है कि वो इतना इंटरेस्टेड है, लेकिन 8 घंटे वो स्लॉग कर रहा है स्कूल में, राइट. तो सीरियसली। तो हम क्या कॉम्बिनेशन ऐसा कर दें कि वो बेसिक्स फुलफिलमेंट भी हो जाए, और बच्चा म्यूजिक को लेकर चले. म्यूजिक से वो लैंग्वेज सीख लेगा, म्यूजिक से वो स्किल सीख लेगा, म्यूजिक से कम्युनिकेशन सीख लेगा. तो एक ऐसा क्या करिकुलम यू कैन मेक सो दैट योर चाइल्ड लव्स लर्निंग. सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लर्निंग. क्यों लर्निंग इतना स्लॉगी पर्सपेक्टिव में क्यों आता है कि लर्निंग मतलब बच्चा डल हो गया, बोर हो गया, अरे एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा. व्हाई डू चिल्ड्रन से पढ़ना पड़ेगा? आई मजबूरी। वॉन्ट टू मेक. हाँ, ये मजबूरी क्यों है? जॉब जैसा जॉब है ना, अरे जॉब जाना पड़ेगा. तो बट आप उन लोगों को देखो, जैसे हम लोग कैसे बात कर रहे हैं ना, एकदम जैसे लग रहा है कि वी विल जस्ट ईट अप द स्पेस, कितना एक्साइटेड हो जाते हैं. वेरी गुड।
तो ये जो स्पार्क है ना, ये बच्चों, ये उन लोगों में आप देखोगे जो दे रियली एंजॉय देयर वर्क, राइट? एंड ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, यानी यानी देयर इज हम्म होप एंड लाइट एंड मैजिक एंड फेथ in the future. बढ़िया है. So I'm super happy talking to you. I know there is so much more to share. Now let's play one word answers. हाँ जी. Life in one word. लाइफ इन वर्ड. एक्सप्लोरेशन. Learning in one word. जॉयफुल. Teacher in one word. टीचर. Uh, डिड यू से टीचर? Teacher, गाइड. teacher, guide. गाइड. Adi in one word. माय लाइफ. Priyanka in one word. माय दैट्स वेरी डिफिकल्ट. ये तो इजी है. आदि को आपने बोल दिया माय लाइफ, तो प्रियंका तो हाँ, that's a very difficult question. ठीक है. um लिमिटलेस हो आप, इन्फिनिट हो, छोड़ो. हम आसान बनाए थे. ये स्कूल थोड़ी है जो मैं -1 थैंक कर गॉड, मुझे तो एकदम दूं. अचानक से स्कूल वाली फीलिंग आ गई. So thank you so much. I wish you all the best in all your थैंक future यू सो मच. endeavors. It was थैंक so यू. beautiful talking to you. I learned a सेम हियर, lot. सेम हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू.